Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I'm going to teach you a short story in both languages, हिंदी एंड इंग्लिश. हिंदी और अंग्रेजी में मैं आपको एक कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी कहानी के रूप में. एंड आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी, और इस कहानी को सीखने के बाद, इफ यू स्पीक द स्टोरी इन फ्रंट ऑफ योर ब्रदर एंड सिस्टर, यदि आप अपने भाइयों और बहनों के सामने एक कहानी बोलते हैं, इट मीन्स यू कैन स्पीक समथिंग इन इंग्लिश. इसका मतलब आप कुछ अंग्रेजी में बोल ले रहे हैं. एंड इन फ्यूचर यू कैन बिकम स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और आप भविष्य में एक अंग्रेजी के वक्ता बन सकते हैं. बिकॉज यू आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप कुछ सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं, एंड यू आर रिपीटिंग दोज इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश, और उस सूचनाओं को आप इंग्लिश में रिपीट कर रहे हैं. सो आफ्टर दैट, आफ्टर द एंड ऑफ ट्रांसलेटिव मेथड, ट्रांसलेटिव अनुवाद वाले मेथड तरीके के बाद, आई विल टीच यू ओनली इन इंग्लिश. मैं केवल इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा. बिकॉज द मोस्ट वे ऑफ डूइंग दिस इज टू नो द इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका इसको जानने का है तो यू शुड नो इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपको इंग्लिश जानना है. सो डियर, आई एम गोइंग टू टीच यू द स्टोरी. मैं आपको कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ. द स्टोरी इज अबाउट अ पोंड ऑफ बटर. एक पोंड बटर के बारे में कहानी है. दिस इज डिपेंडेबल ऑन लाइक द स्टोरी ऑफ ऑनेस्टी. यह एक स्टोरी ऑफ ऑनेस्टी, इट मीन्स कहानी है ईमानदारी की. सो इट इज अ स्टोरी ऑफ ऑनेस्टी. यह कहानी है ईमानदारी की. सो द स्टोरी इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. कहानी यहाँ शुरू हो रही है. देयर वाज अ फार्मर, एक किसान था, हु सोल्ड अ पोंड ऑफ बटर टू अ बेकर, जो बेचा करता था अ पोंड ऑफ बटर, एक पाउंड बटर, टू टू अ बेकर, एक बेकर को मतलब बिस्किट और ब्रेड बनाने वाले को. वन डे, एक दिन, द बेकर डिसाइडेड टू वे एक दिन बेकर ने निर्णय लिया कि वह वेव मतलब तौलेगा द बटर को, टू सी, यह देखने के लिए कि इफ ही वॉज गेटिंग द राइट अमाउंट, कि क्या वह सही अमाउंट प्राप्त कर रहा है, सही मात्रा प्राप्त कर रहा है मक्खन की. ही वॉज नॉट, विच ही वॉज नॉट, जो कि वह नहीं प्राप्त कर रहा था. इट मीन्स देर वॉज सम मिस्टेक इन द बटर, इन द मेजरिंग ऑफ बटर. सो ही टोल्ड, ही एंग्री अबाउट दिस, इस चीज के बारे में एंग्री, क्रोधित होकर के, ही टुक द फार्मर टू कोर्ट, वह फार्मर को न्यायालय ले गया. द जज आस्क्ड द फार्मर, जज न्यायाधीश ने किसान से पूछा, इफ ही वॉज यूजिंग एनी मेजर, कि क्या वह कोई मेजर, कोई तौलने का मेजर मेजर बट का उपयोग कर रहा था, टू टू बाट उपयोग कर रहा था, टू वेट तौलने का. द बटर मीन्स होता है व्हाट, बटर मीन्स मक्खन का. द फार्मर रिप्लाइड, किसान ने उत्तर दिया, ऑनर मालिक, आई एम प्राइमिटिव, मैं आदिम हूँ, अर्थात मैं प्राचीन कालीन हूँ, अर्थात आई एम नॉट मॉडर्नाइज, मैं आधुनिक कालीन नहीं हूँ. आई डोंट हैव अ प्रॉपर मेजर, मेरे पास कोई उचित तौलने वाला चीज नहीं है. बट आई डू हैव अ स्केल, लेकिन मेरे पास एक स्केल है, एक तराजू है. द जज आस्क, न्यायाधीश ने पूछा, देन हाउ डू यू वे द बटर, तब तुम मक्खन को तौलते कैसे थे. द फार्मर रिप्लाइड, किसान ने उत्तर दिया, योर ऑनर, मेरे मालिक, लॉन्ग बिफोर, लंबे समय से, द बेकर स्टार्टेड बाइंग बटर फ्रॉम मी, बेकर ने प्रारंभ किया खरीदना बटर मुझसे. आई हैव बीन बाइंग अ पाउंड ऑफ लोफ ऑफ ब्रेड, मैं एक पाउंड लोफ ऑफ ब्रेड मतलब रोटी का टुकड़ा खरीदा करता था, फ्रॉम हिम, उससे, एवरी डे, प्रतिदिन. वेन द बेकर ब्रिंग्स द ब्रेड, जब बेकर ब्रेड लाया करता था, आई पुट इट ऑन द स्केल, तो मैं इसको तराजू पर रख देता था, एंड गिव हिम द सेम वेट, और उतना ही भार मैं उसको दे देता था इन फॉर्म ऑफ बटर के रूप में. इफ एनीवन इज टू बी ब्लेम्ड, यदि किसी को ब्लेम्ड, दोष लगाया जाना चाहिए, तो इट इज द बेकर, तो यह बेकर है. इट मीन्स द रनर ऑफ बेकरी, जो बेकरी चला रहा है वह है.
So moral of the story is that in life, जीवन में you get what you give. आप वही प्राप्त करते हैं जो आप देते हैं. Don't try and cheat others. एक कोशिश मत करो कि दूसरों को cheat, धोखा दें. So in this way, I have told you the story in bilingual way. And right now, I'm going to study the story in front of you in only one language, that is English. I will not use any word of Hindi because I'm here not about teaching you Hindi, but I'm teaching you English. And the main motto of learning this way is to know English. So, right now, after the end of the story, I am once again going to begin the story in only English. So, please study the story from me. So, there was a farmer in a small town, as I am making a story in my mind, and I will not do the copy of the first one. So, right now, I'm just getting information and translating in front of you so that the same kind of work you can do there and you can learn English language easily. So dear, I'm telling you that there was a farmer and he used to sell butter to a baker and a pound of butter to a baker regularly. And after some days, the baker decided to weigh the butter so that he can know that if he is getting the right amount of butter or not. So after measuring it, he found that the butter was not a complete a pound of butter. So he was upset and took the farmer in the court. Judge asked the farmer, "Do you measure your butter before giving to the farmer or to the baker?" The farmer told, "My lord, I am very primitive and I'm somebody who don't believe in modernization and I have no proper weight with me to measure it, but I have a skill and I used to buy bread from his shop, and when he bring the bread the bread from his shop to 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 me, I used to put that bread on one side, a pound of bread was it, and I used to also give him a pound of butter. So I used to put that pound of a pound of what the a pound of butter from a pound of bread which I bought from him. I put on one scale, and on the other scale I used to put a pound of butter. So I measure in this way. So I used to give him the bread, the butter. So in this way, I used to do the activities regarding measuring the butter. So if somebody must be blamed for the mistake, that is not I, that is that person, the baker one, and he has done the mistake because he was giving me less amount of bread, and that's why he was getting less amount of butter. So in we what is the moral of the story? We learn it that what we give others, that's we get in return. So in this way, I have told you the story in English, although there was some kind of mistake, but you must remember that you have to learn a story one by one. And after reading these all stories, please try to memorize this story and speak in front of your brother and sisters. Before doing anything, I'm telling you, memorize something. Try to memorize some words. Memorize something because if you are memorizing today, it means in future you are going to speak very well. So it is a kind of way of learning. If in the early stage you are not memorizing something, your memory is not becoming good. So please memorize something, study something, and then after you should speak the English in front of your brothers, sister, teachers, and anyone who can speak English language. So if you are doing that way of learning English, it means you are going to become the master of English language in future. This is really to be a global language, and this is going to make you global. And if you want to be an engineer or a doctor, you can become great and you can flourish. Flourish means falla falla in your life very well. So dear, in this way I'm going to end my videos. Please like, share and subscribe my videos. Please do comment. Thank you very much.